baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right and away, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know, and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium. The limit of love is endless, I know. So good morning everyone. So this is the first ride on my Interceptor with my friends. इसके पहले अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बस अब तक एक पुणे की राइड की है, एंड आई एम राइडिंग विथ कल्पेश. सो कल्पेश इज़ वन ऑफ माई KTM group friend. We met in a KTM ride and he is just in front of us. And कल्पेश का एक friend है who is a Versus 650 owner, so he is just ahead. आज का जो राइड है it is just a pure ride experience. आज का डेस्टिनेशन भी हमने फिक्स नहीं किया कि कहाँ जाना है. By the way, this is the अहमदाबाद हाईवे, एंड हम लोग अहमदाबाद हाईवे पे जितना दूर हो सके उतना दूर जाके विल रिटर्न बैक, क्योंकि अभी तक गर्मियों का सीज़न चल रहा है एंड इतनी गर्मी पड़ी है ये साल कि नॉर्मल जो हर साल होती है इस साल की गर्मी कुछ अलग ही है. सो कोई भी राइड प्लान करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट आज क्योंकि कुछ फ्रेंड्स अवेलेबल है, सो वी थॉट गर्मी हो बारिश हो जो होना है हो, विल गो फॉर अ राइड. क्योंकि इंटरसेप्टर को अभी तक हाईवे एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ पुणे जाते वक्त किया है एंड सुपर्ब लग रही है अभी गाड़ी चलाने में. सुबह अब तक गर्मी नहीं है, इट इज़ नॉट सो हॉट, बट अभी धीरे धीरे जैसे ही 8:30-9 बजेंगे. बाय द वे द टाइम इज़ नाउ 7:42 AM एंड मैं आपको बताते रहूँगा यहाँ का मौसम हाल, क्योंकि बारिश के पहले शायद ये लास्ट राइड है. इसके बाद जितनी भी राइड्स आएंगी वो बारिश पे आएंगी एंड बारिश का मज़ा लेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. Could care less the cost. I give you my everything. Some would say I'm insane in the right and away, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know, and give me your freedom. Whoa, you love me
फर्स्ट टोल ऑन अहमदाबाद हाईवे। जब आप मुंबई से अहमदाबाद की तरफ जाते हैं, और ये टोल नाका का हालत देखिए। कार ड्राइवर्स आर बिकमिंग इनसेंसिटिव डे बाई डे। मतलब यार, टू व्हीलर का रास्ता भी कवर करना है क्या सबको? ट्रक घुसी पड़ी है टू व्हीलर के लेन में, कुछ तो सेंस रखो। Life is so easy. Whoa, you love me to pieces. Yeah, I need it. Won't you bend और मोस्टली वी आर प्लानिंग टू go to Nargol beach. Yes, that's a beach in Gujarat. So we'll be crossing the Gujarat border. And Interceptor मेरी first time it will be crossing a state border. So मज़ा आ रहा है अभी तक गाड़ी चला के. And I have also changed some of the settings on my camera. पहले जो व्यूइंग एंगल था KTM में, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट व्यूइंग एंगल ऑन दिस इंटरसेप्टर, बिकॉज दोनों अपराइट बाइक है, लेकिन दोनों का स्टांस थोड़ा अलग है. सो आई होप दिस एंगल गिव्स अ गुड रिजल्ट. नहीं तो फिर मुझे फिर से थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे. तो चलिए चलते हैं आगे. सो राइट नाउ मैं क्रॉस कर रहा हूँ सेकेंड टोल प्लाजा ऑन द अहमदाबाद हाईवे. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द लास्ट टोल प्लाजा बिफोर यू एंटर गुजरात. दिस इज ऑन द महाराष्ट्र साइड, एंड समवेयर I have missed Kalpesh. I don't know whether he is waiting somewhere or not. But बहुत टाइम से मुझे कल्पेश दिखाई नहीं दे रहा. I hope he is waiting somewhere ahead. चलो, let's see. वेल हम लोग रुके थे इधर आहूरा में, एंड देयर इज़ अ स्मॉल चेंज ऑफ प्लान. लुक एट दिस बाइक, ही राइड्स एवरीवेयर आई गेस. सो दिस इज़ वेरी फेमस आहूरा होटल. यहाँ पे सैटरडे संडे राइडर्स आते हैं विद देयर beast to spend some time to have some long ride. So that is Kalpesh. This is a new friend. He's owning Versys from past 2.5 years, and so we met him today. And Kalpesh is my old friend, KTM friend. So chalo chalte. We are going towards Mandri Lake now. Let's go. So now what we have to do, we'll go straight
and take a U-turn. The main task, if you want to take a U-turn on this kind of busy highway, that is आपको रुकना पड़ेगा to get proper gap between vehicles on both side of the road. जैसे कि अभी आ रहा है, so we'll try whether we can take this. Yes, चलो ये तो लेके हो गया. Now we can go. Well, so that is how it is. चलिए आगे चलते हैं. So जैसा कि मैंने कहा बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ दिस व्लॉग कि आज का डेस्टिनेशन इज़ द जर्नी. आज का डेस्टिनेशन कुछ भी फिक्स नहीं है. जहाँ पे मन करे जाएंगे, जहाँ पे नहीं मन किया नहीं जाएंगे, ऐसा टाइप. सो आज फिर भी हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे नारगोल बीच. बट ये वेदर और ये धूप को देखते हुए वी चेंज द प्लान एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स वांद्री लेक. वांद्री लेक आते आते आहुरा होटल से मैं रास्ता मिस कर गया एंड आई मिस द लेफ्ट टर्न एंड आई वेंट स्ट्रेट. सो काफ़ी करीबन 8 किलोमीटर आगे जाके मुझे यू टर्न मारना पड़ा एंड कल्पेश एंड हिज फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी. सो अभी चल रहे हैं हम लोग वांद्री लेक की तरफ. एंड वांद्री लेक अब धूप में गर्मी में कैसा होगा मुझे पता नहीं, बट अगर आप यहाँ पे आजू बाजू कहीं रहते हैं तो डेफिनेटली इसको मॉनसून में विजिट कीजिए. बहुत खूबसूरत लगता है ये लेक. और अगर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो अमेजिंग व्यू आता है इस लेक का. चलिए चलते हैं वहाँ पे. So guys, this is वांद्री लेक. इफ़ यू डोंट नो दिस प्लेस आप आ जाइए. बहुत नज़दीक है मुंबई से, थाने से या नई मुंबई से, वेर एवर यू लीव. एंड अगर आप दूर से भी आ रहे हैं शायद पूना या और कहीं से, सो यू कैन कम. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. बट अभी ये लेक की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज गर्मी का मौसम चल रहा है एंड गर्मी के मौसम की वजह से ये सारा पानी जो है, यू कैन सी, ये सारा पानी सब
पीछे पीछे चला गया है, नहीं तो ये सामने तक, यहाँ तक ये पूरा पानी आता है यहाँ पे, जो भी आपको बोल्डर्स वगैरह दिख रहे हैं। एंड पब्लिक सुधरेगी नहीं, सब कचरा यहाँ पे, प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक पेपर्स, यूज एंड थ्रो डिशेस सब इधर है। डोंट डू दिस प्लीज़, इतनी खूबसूरत जगह को बर्बाद मत करो यार। सो दैट्स इट, सो वी आर लीविंग नाउ एंड अभी जा रहे हैं बैक टू होम। इट वॉज अ नाइस जर्नी, नाइस राइड। गर्मी अभी काफ़ी है, सो माई बीस्ट इज़ वेटिंग फॉर मी हियर। सो दैट्स वर्सेस 650, दैट्स KTM Duke 200 कल्पेश का। एंड आइए इधर, मज़ा आएगा। बारिश में आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो चलो, सी या, विल मीट यू इन सम अदर व्लॉग, बाय।